is all about breaking barriers, amplifying voices, and driving change as we all try to create a lasting change in this world. Now, women now are not only creating businesses, they are not only starting entrepreneur adventures, but they are reshaping industries. They are trying to bring about innovative solutions, and they're creating opportunities for the others, men and women included. And today we have the privilege of hearing from some incredible women who have changed their challenges into opportunities and ideas into enterprises and ambition into action. So before we begin, let's take a moment to acknowledge the resilience, creativity, and leadership that women entrepreneurs bring to this global community. Their journeys are not stories, they are roadmaps for the future of inclusive and sustainable business. And today we have an outstanding lineup of speakers and who will be here sharing their experiences and insights with us. And so let's get ready to have an engaging discussion. And first, let me move on to our first speaker today, who is Ms. Sonmani Chowdhury. She is the Program Director, BSLD, which is Bihar Sustainable Livelihood Development Project of Passing Gifts, which is a subsidiary of HIFA International. And the BSLD is a program in Bihar that is managed by Passing Gifts, a subsidiary of HIFA International. And this project aims to help smallholder farmers, especially women, to achieve sustainable livelihoods. Sonmani is very passionate about bridging the gender gap and fostering social transformation and development. So Sonmani, tell me about your experiences in the field of rural women entrepreneurship. Over to you, Sonmani. So hi Anjana, thank you so much. And I hope I'm audible. Yes, you're audible. Yeah. Yes. And, I'm so delighted to see everyone. And I would like to convey my heartfelt thank to people, rural women from Bihar. आप सबको मेरा नमस्कार है. और मुझे लगता है आप लोग सब सेटल हो गए होंगे. So thank you so much, Anjana. And with regards to my experiences, I would like to say that as we all are celebrating International Women's Day today, and we are focusing on the rights, equality, and empowerment related aspects of women, I'm so encouraged to see the change makers in various capacities and various role here, not only women, but also male colleagues and male member who are extending all possible support to make this rural entrepreneurship and rural women empowerment a reality. So, and I was since last 3-4 days, I was listening to news, and there has been news all over stating that our Prime Minister Modi ji is scheduled to attend the Lakpati Didi program in Gujarat. So, Lakpati Didi is again a rural India-focused government initiative, which is aiming at economically empowering 2 crore women SAG members. And the scheme aims that women earn at least 10,000 rupees a month or an earn an annual income of at least 1 lakh rupees annually through agriculture, animal husbandry, and small industries, and become Lakpati Didis. So by program like this, and there are several other programs, government is also recognizing the importance of women work for Indian economy, and also trying and emphasizing on enhancing female labor force participation in India. So you all would agree that India is going through this structural transformation across all the states, where the overall contribution of agriculture to gross domestic product is declining, and for other sectors it is improving. So if I talk about data, then agriculture and allied sector, which has been the backbone of Indian economy, especially rural economy, it contributed around 16% in 2024, and it supported around 46% of the population. But the sector is growing vulnerable to weather related variabilities, and which indicates that the sector
agriculture sector itself is growing vulnerable. And if I talk about more granular data, 55% of the net sown area under agriculture, it receives irrigation. So data is also not supporting and contributing towards agriculture-led growth. In 2022, agriculture contributed 37% to rural India's GDP, and it employed around 61% of India's workforce, which indicates significant underemployment. If I talk about job growth in non-farm sector, it is also not matching with the increased GDP contribution. For example, if I talk about non-farm sector like manufacturing and services, their contribution is 14% and 38% to the GDP, but they generated only 8% and 19% of the employment in past year. So non-farm sector is also not able to create significant if we compare it to their growth in the GDP sector. So it also implies jobless growth. So rural India as well as urban India needs more entrepreneurs to boost employment and the rural economy. In Bihar, under our Bihar Sustainable Livelihood Development Project, we are supporting 71,000 smallholder families around three major value chains, which includes agriculture, horticulture, goat, and poultry. Under this program, we are also promoting thousands of grassroots entrepreneurs, which includes community agro vet entrepreneurs, progressive goat farmers, women smallholder farmers emerging in agriculture space. And I'm happy to note that majority of them are first generation entrepreneurs. If I talk about caves, some of the caves are here today with us today. So cave are advising farmers to regarding upkeep of the goats and benefits of rearing them following improved animal management practices. Uh, And they are also Sorry to interrupt you, Sonmini. Can you just tell the audience what cave is? I mean, some of cave is community agro vet entrepreneurs. They follow. I'm talking about them only. So cave is advising farmers on regarding taking care of the goats, benefiting. They also communicate to the community regarding benefits of raising goats following improved animal management practices. They are also acting as a bridge to connect them to the farmer producer companies as well as markets. So many caves are actually also supply stores. They also facilitate seed, fertilizer, animal feed, not just veterinary care services to the rural smallholder farmers. And majority of them are women only because Bihar is struggling with this migration related implications. So goat is our major value chain, and through FPCs, we are also promoting collective sales of goat. It is not just benefiting progressive farmers; it is also benefiting the women-only farmer-producer companies in Bihar. And just let me quote a very happy business related news. So because of this holy, we are able to do uh, uh, quite good farmer producer company led goat sales, and it is expected to exceed INR 50 lakh. And it highlights the impact of supporting goat raisers in an organized way, because this is nothing but a power of aggregation. So with growing progressive farmers under BSLD, right now we have over 12,000 progressive goat farmers. I believe we will cross two times of sales next year. So cutting it short, existing women-owned non-farm and farm enterprises, majority are subsistence farmers, and our experience state that they need tailored interventions as well as mentorship. We are extending them technical services, we are facilitating financial services for them, and we are also working around policy related support and extending them convergence related benefits. But they also need long term mentorship to grow at a higher rate, and also manage growth and competition, which is more important to sustain as an entrepreneur. And women owned
and managed enterprises are, you all will agree that they are important entities to address the declining female labor force participation in rural India, though nowadays it is increasing. It is not at 27%, it is growing. So it is helping create more jobs for Indian women. And as we all are celebrating International Women's Day today, I believe it is very important to recognize and celebrate the remarkable grassroots entrepreneurs. They are the trailblazers, and they are not only building successful rural businesses at the ground level, they are also supporting and strengthening their communities, and they are also paving the way for future generations. So with this, I will stop here. Thank you, Sonmani. That was very insightful. We truly understand how great work the caves are doing, and I think since, as you mentioned, that Bihar is witnessing the migration problem, women had to step up, and they have stepped up wonderfully. So to know more about it from their own mouth, let's welcome another guest, a very special guest. She's from Bihar. She's Srimati Meera Devi. She's one of the caves that Sonmani was mentioning. She's from Muskan SHG from Muzaffarpur, Bihar. So स्वागत है आपका मीरा देवी जी. प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ कि आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं. Is Meera Devi present here? I think she's on mute. She's talking, but M. Mishra, she's on mute. Okay, okay. So who is helping her? Yeah, we just. मीरा जी, if you could आप अपना माइक को अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो. अरे मीरा जी का माइक अनम्यूट करके उनको बोलने बोलिए ना. अनीश, ये थोड़ा सा फोन करके बोलिए अनम्यूट कर देने, उनसे हो नहीं पा रहा जी है. जी मैम, जी मैम, जी मैम. मीरा जी सुन पा रही हैं? बोलिए. कैमरा थोड़ा सही कर जी लीजिए सर. मिश्रा जी, उनका, मीरा दीदी का. सर पूरा पूरा. सर नमस्कार, मेरा नाम मीरा देवी है और बैंगरा गांव के रतवाड़ा पंचायत के रहने वाली हूँ. और एजुकेशन मेरा 10th कंप्लीट है. जैसे कि मैं पहले बेरोजगार बैठी हुई रहती थी, अपने गांव में घर में जो काम था वो करती थी. और एक कंचन सेवा आश्रम के तहत जो एक समूह खुला, तो उसमें हम गए तो देखे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, महिला सब उसमें जुड़ी हुई थी. तो हमने वहां पे गए और देखे कि बहुत सारा दीदी वहाँ समूह में बैठी हुई है, समूह के माध्यम से उसमें सेविंग करती थी. तो हम भी वहां पर पहुंचे और बोले कि मुझे भी सेविंग करना है, हम भी सेविंग करेंगे. तो ये जो हमारे सीएफ दीदी है वो बोली कि ठीक है, आप कर सकते हैं सेविंग. तो हम 2-4 मतलब महीना में गए, उसमें बैठे सेविंग भी किए. और उसमें समूह प्रबंधन का प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद 12 आधारशिला का प्रशिक्षण हुआ, तो उसमें भी हम गए. उसके बाद फिर उन्नत पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण हुए, उसमें भी हम गए तो बहुत सारा चीज सीखे. लकड़ी वगैरह से मतलब खेल हुआ था, जिसमें एकता के बारे में बताया गया था कि एकता में क्या मजबूताई है. तो हमने वो सब सीखा, बहुत सारा बात जानकारी हुआ. उसके बाद हम भी सोचे कि कुछ इसमें हम पढ़ लिख करके बैठे हैं घर में, तो इसमें कुछ काम वगैरह होता तो हम करते. तो सीएफ दीदी को भी बोले थे. उसके बाद थोड़ा दिन बाद फिर सीएफ दीदी ने बोली कि एक एक दीदी का बहाली होगा. तो हमने कहे कि जे ठीक है, हम करेंगे केब का काम. तो सीएफ दीदी बोली कि ठीक है, आप करने के लिए इच्छुक है, लेकिन आप अपने परिवार में जाकर के परिवार से विचार कीजिए, क्योंकि वहां पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना होगा घर से.
तो हमने आए घर में विचार किए परिवार में, तो हमारे घर का आदमी, जो परिवार का आदमी है, हस्बैंड, वो मतलब साथ दिए, बोले कि ठीक है जाओ। तो हम वहां से विचार करके आए। उसके बाद फिर हमको 1 सप्ताह के लिए मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग में भेजा गया। उसके बाद वहां से हम ट्रेनिंग लेकर के आए। तो समूह समूह गए, हर समूह में सीएफ दीदी के साथ। तो सीएफ दीदी भी सपोर्ट किए, और हम भी जाकर के सारे समूह में बताए कि हमने प्रशिक्षण लेकर के आए हैं, बकरी का इलाज उलाज करेंगे, कृमिकरण करेंगे। तो दीदी सब शुरुआती दौर में तो बहुत सारा दिक्कत हुआ। दीदी सबका विश्वास नहीं हो रहा था कि जो दीदी सब दिन तो घर में काम काज की, अब एकाएक कैसे दीदी मतलब डॉक्टर बन जाएगी। फिर उसके बाद सीएफ दीदी के साथ हम मतलब घूमते रहे, दिन दिन भर समय देते थे, घूमते थे, वहां पर जाते थे। जो दीदी के पास मतलब 5-6 बकरी था, उसमें दीदी मतलब 2-3 दीदी का बकरी का दवाई पिलाती थी। जब धीरे धीरे दीदी दवाई बकरी का पिलाए, 2-3 बकरी का, कुछ दीदी का फायदा हुआ, विश्वास हुआ, तब दीदी धीरे धीरे मतलब बुलाने लगे तो कृमिकरण से शुरू किए, कृमिकरण किए। उसके बाद इलाज उलाज धीरे धीरे करने लगे। दीदी सबका विश्वास जमा, हमारे पारावेट सर है, वो भी सपोर्ट किए। तो हम फील्ड में जाने लगे। उसके बाद फिर 3 दिन का फिर बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग हुआ। उस ट्रेनिंग में भी मुजफ्फरपुर बुलाया गया, उसमें भी हम गए। तो 3 दिन का ट्रेनिंग लेकर आए, और बिजनेस के बारे में हमको जानकारी मिला कि बिजनेस कैसे करेंगे और कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आए तो विचार किए अपने परिवार में। तो विचार करके हमने एक छोटा सा दुकान का, दवा दुकान का मतलब दुकान की। उसमें हमारे हिफर कंचन सेवा आश्रम के माध्यम से हमें 10,000 का सहयोग राशि मिला, जिससे हम दरवाजे पर अपने दुकान किए हुए हैं, और उस दुकान से कुछ कमाते हैं, कुछ फील्ड में जाके कमाते हैं। और नेपियल घास होता है, वहां से आए तो नेपियल घास भी हमको मिला कंचन सेवा आश्रम के तहत फ्री में, जिससे हम 3 कट्ठे में लगाए और 15,000 रुपया उससे कमाए। और कमाते कमाते मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दीदी सबका विश्वास हुआ। दीदी सब बुलाती है, आज फील्ड में जाते हैं, रात हो दिन हो, जिस समय दीदी बुलाते हैं उस समय जाते हैं। और हमारे घर का आदमी भी सपोर्ट करते हैं। अगर रात रहता है तो उस समय तो अकेले हम नहीं जा पाते हैं, तो बाइक से छोड़ देते हैं जा करके, और इलाज कर लेते हैं, फिर ले आते हैं। तो इस तरह से अभी हम 14 से 15,000 रुपया कमा रहे हैं। और बहुत सारा ट्रेनिंग भी हुआ है समूह में, उससे भी हमें कुछ सीख मिली है। और आईएम का, रिफ्रेशर का, मैं सीखते सीखते खुद से ट्रेनिंग दिए हैं समूह में। धन्यवाद मीरा देवी जी. So it's really inspiring to know that the lengths she would go, that she went for a great, she went for training, and then she diversified her income sources through treatment, through medicine shops, and through raising Napier and all that. So it's truly inspiring. And Dhanyavad Meera Devi ji for coming forward and talking to us. And now let me welcome Dr. Nutan Kaushik. She is the जी, director. मैं यहाँ तक आने के लिए और इतना आगे बढ़ने के लिए मैं हिफर और कंचन सेवा आश्रम के तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। Thank you, Meera Devi ji. So now let me welcome Dr. Nutan Kaushik. She's the Director General of Amity University, a PhD in Agriculture Chemicals from Indian Agriculture Research Institute. She has more than 25 years of experience in research. She has worked extensively in a plethora of uh, forums. And please tell us about your academic journey, ma'am. So, how was it being a woman in a largely male-dominated academic field, or does it even matter being a woman? So, how was your journey? Thank you, Anjana. I think I lost my video somehow in Yeah, I was trying to find you. Okay, doesn't matter. Actually, you are rightly said that it's very difficult for a woman to come through
all the hurdles which are being posed. But I was very lucky to have a very supportive parents right from the beginning. So, and then my supportive family after my marriage. Because for a married woman, unless the support comes from the family, the woman cannot rise. So I was very, very fortunate that I have supports from my family from right from the childhood and right until now also. I have very supportive family. So, but then coming to the professional front, you really the women have to like prove much more than the men has to. Okay, so they really have to prove that yes, they can do it, and they can, and not only do it, but do it much better way than the men can do it. So unless you prove it, nobody is going to believe you. So with your hard work, with your patience, you really have to have a lot of patience. But sometimes the success doesn't come easily, okay? You really have to prove yourself, not only at one front, but different forums and right from this one. But I was also fortunate to have like a lot of international exposure because and that also gave me a lot of confidence because in academics unless you keep yourself abreast with the latest happening, you are nowhere. Okay, so you have to keep learning. Learning is never ending. That's first thing. So if you think that you have learned enough and then that's the end of your career. Okay, so keep learning, keep improving your skill sets, keep improving, working hard, and that's I'm still and take up the challenges. Whatever the challenges come, take up the new challenges. Don't keep working on the routine or trodden paths. Just take a new path. Unless you take a new path, nobody is going to recognize you. The path which is followed by many people has already been followed by, but you have to really take a new path which has not been so far like exploited or been explored by anyone. So that way you gear up your more momentum. Now coming to this women entrepreneurship and so on, like so for example, uh, when I was this, we also at IBT University give a lot of training to the rural women. Okay, in so there we have like we give them the like training in like food processing, like how they can gear up together and then make this a self-help group, and then not only we give them the training on this food processing, how to produce the different products like achar, chutney, but a new blend of the products. It's not the routine kind of food products like routine jams, routine jellies. We train them in how to create new blends. Okay, like for example, avla and bale. Okay, people normally process amla separately, process bale separately, but we created a lather. We trained the women how to create a lather by mixing both the together and to make it a healthy food. So that's why the women which are trained by us, the products which are developed by them are different than the products which are already in the market. If the product is different, then we provide them the hand holding in the marketing also. Branding, marketing, all these training supports are very much important to make them a successful entrepreneur. So far we have trained more than 500 women in this food processing training, and we have also trained the farmers how to in the sericulture to grow this what you call the worm which creates by which the cocoon by which you get the silk. And we have trained so in sericulture we have trained them, and this is a new upcoming area because now India want to become self-sufficient in sericulture, in silk production. So far we are importing it. So that's another area where women farmers can come together, learn about the sericulture, particularly in those areas where it can be grown. And then because and there are targets also to how to make India self-sufficient in silk production. So this is another area where women farmers can come together and then generate entrepreneur and develop, take it up as an entrepreneurship model.
Third thing is that, like we know that our food is poisoned by the chemical pesticides. So how we train the farmers, women, how not to use the chemical, and at the same time they produce their own biopesticide, biocontrol agents, and then like the trichoderma, we train them. They're using their own equipment, like simple equipment like pressure cooker and kitchen. In the same kitchen, they can also produce the biocontrol agents like trichoderma, pseudomonas, and all these things, and then sell it. Apart from vermicomposting and all that, they can also produce these biocontrol agent and sell and in bulk, and then sell it to their farmers. So that they are also developing not only the entrepreneurship, but they are also making our food safe by providing the right inputs to the farmers rather than giving them the chemical pesticides. So like but our experience is this: wherever the women, we have worked with the women farmers, we have achieved 100% success with this one. So that is a power. So women have that kind of power, commitment, that whatever they take up, they make it to the level where it becomes a successful. So this is my brief experiences with the working with the women farmers, as well as at my personal friends. Thank you. Nutan ma'am, you have trained many students under the Yes. PG and PhD, and you have Yes. also seen many women, I mean, female Yes. students. Yes. So when choosing a career, how Hmm. many women choose the academic path, and how many go out of the academic area and they go for a more, like a static job in the office? Because if you are in the academic area, you have to keep on learning. You have to keep, as you said, you have to keep abreast with whatever is happening. So how Yeah. many women would choose to, like in your experience, how many would your students, how many had chosen to be in the academic field, and how many had chosen to go out? I would say, again, as I said, that family support is very important. Because women ultimately had to get married, and then if they do not have, I've been blessed with the students who have got wonderful support from their family, and also those students who have not got the support from the families. So those students who did not get the support from the family, they had to really, really compromise with this kind of without a support system. They really have to go for this kind of static kind of job profile. Whereas those who got the support from this family, they could go for the kind of exploration. So family support is very important for the female students. This is what that is the reason maybe the less and less women are getting married at early age, because of the lack of the support from the family, and they are getting married at higher age. But those who married at early age, because we still have that kind of family system where they want the girls to be married early, and so this is my personal, but it's 50-50. But support system is very important. Many times even parents don't support. So family support is very important. But in that case, the girl has to be very strong. So here, if it is girl is earning, then it can defend itself. If it's not earning, then it becomes difficult to support for that kind of career paths. Thank you, Nutan ji. And I hope one day we can all say that we became so and so, not because our family supported, but just because we wanted to be. So let the day come soon. Yes, I wish so. Now we'll move on to another guest. She's coming all the way from Odisha. It is Srimati Anjali Mahanta. She's a progressive poultry farmer. She belongs to Ma Lakshmi SG from Odisha. So अंजलि जी, स्वागत है आपका। और बताइए हमें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक पोल्ट्री फार्मर होने के। नमस्कार, ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତ। ମୋ ପରିବାର ଆମ ପିପଳିଆ, ଆମ ଗାଁ ପିପଳିଆ। ମୋ ପରିବାରରେ ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛୁ।
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭିଂ। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो उड़िया में बोलेंगे तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। वो मैम बोल रही है कि उनका नाम अंजलि महतो है, वो घटगांव ब्लॉक की पिपलिया विलेज से हैं, और इनका फैमिली में इनका हस्बैंड, सास ससुर और 2 बच्चे हैं। बोलिए दीदी बोलिए। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ उनका हस्बैंड उनका ड्राइविंग करते हैं। ତ ଆଗରୁ ହଉଛି ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଘରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ବି ମାନେ କେତେବେଳେ ତ କୋଉ ମାସରେ ଠିକ ରୁହେ, କୋଉ ମାସରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଏସଏଚଜି ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଘରେ ବସିକି ରହିଲୁ, କିଛି କୁଆଡୁ ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ तो दीदी बोल रही है कि उनका हस्बैंड ड्राइविंग का जॉब करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो इसके लिए उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड था, घर चलाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था। इसके बाद उनको एससीजी से वो बात की, एससीजी ज्वाइन किए। एससीजी ज्वाइन करने के बाद एससीजी में उनको बहुत सारा स्कीम बताया गया, उनको बहुत सपोर्ट देने की बात की गई। तो उनको ତାପରେ ଉସ୍କା ହେବାରୁ ଆମର ଗଲେ ଦିଦି ମାନେ, ସେଫ୍ ଦିଦି ମାନେ ଗାଁକୁ ସେଜିରେ ବୁଝେଇଲେ, ତା ମିଟିଂ କଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମକୁ 12 ଆଧାରଶିଳାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଯେ କେମିତି ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିକି ମା ମାନେ ଘରେ ରହିକି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ବିଜନେସ କରିବେ। इसके बाद मैम यहाँ पे जो उसका की तरफ से हाइपर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उन्होंने जाके एसएजी जो वो ब्लॉक लिए थे, उस ब्लॉक में जाके एसएजी मीटिंग की। दीदी ने उस मीटिंग को अटेंड किया। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो 12 कॉन्स्टेंट का ट्रेनिंग हुआ, आईएम का ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारा ट्रेनिंग उनको दिया गया, सेविंग करना सिखाया गया, और उनको सिखाया गया कि पोल्ट्री से कैसे वो इनकम कर सकते हैं। पोल्ट्री का बेनिफिट सिर्फ वो ईटेबल आइटम नहीं है कि खाने के लिए यूज किया जाए, वो बहुत बड़ा रिसोर्स भी है एक फंड का। वो सब भी उनको समझाया गया, सिखाया गया। इसके बाद वो पोल्ट्री रखना स्टार्ट की। ଆଗରୁ ମାନେ ଆମେ ଘରେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଏମିତି କମ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆମେ 10ଟା କୁକୁଡ଼ାରୁ ନେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ 10ଟା କୁକୁଡ଼ାରୁ ଏବେ ଘରେ 250ଟା କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ମାସକୁ ମୋର तो स्टार्टिंग में दीदी क्या की थी कि वो 10 पोल्ट्री से स्टार्ट की थी, जो उसमें कुछ लोग घर में भी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जैसा उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको सिखाया गया इसका बेनिफिट्स, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बिजनेस मॉड्यूल से स्टार्ट किया है, और बिजनेस के हिसाब से उसको बढ़ाना शुरू किया है। घर में कंजप्शन जो हो रहा था, उसके बाद भी वो बहुत सारा कुछ सेल कर पा रही थी। स्टार्टिंग उनका 10 पोल्ट्री से हुआ था, जो कि बढ़ के उन्होंने 200 तक उसको लेके गए हैं। ତ ସେଥିରୁ ବଢିଲା ପରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କଲି। ବିକ୍ରି କରିକି ମାସକୁ ରୋଜଗାର ମୋର 20ରୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। तो इसका वो जो मैं बढ़ाई है 200 तक पहुंची थी, इसके बाद उन्होंने उसको सेल करना जब स्टार्ट किया है, तो वो महीने में 25,000 से 30,000 का वो सेल कर रही थी। ସେଥିରୁ ମୋର ଘର ପରିବାର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ସେଠୁ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ରହିଲା କଣ, ମୋର କିଛି ବି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ रखुची से जो बैंक रे। वो उससे जो मैडम इनकम हो रहा था, उनका उनका इनकम से वो उनका जो बच्चे का पढ़ाई हो रहा है, वो पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी, उसका उनका खुद का इनकम कर रही थी, और घर का भी सामान वामान खरीदने में हस्बैंड का हेल्प कर रही थी। ତାପରେ ସେଠୁ ଯୋଉ ରୋଜଗାର ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଋଣ ଆଣିଥିଲି, ସେଠୁ ବି ସୁଝି ପାରୁଛି ସେଇ ପଇସାରୁ। वो बैंक से भी मैम उनका पहले कुछ लोन था, जो कि वो पोल्ट्री का सेल करके जो वो खुद इनकम कर रही थी, हस्बैंड का एडिशनल इनकम के साथ में ये जो इनकम था, उससे वो बैंक का लोन को भी रिफंड कर पाई हैं। ତାପରେ ମୋ ଚାଷ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ଦେଖିକି ଆମର ସ୍କାଇପରୁ ଗୋଟେ ଘର 52,000 ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଦେଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲସେ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରୁଛି, ଆଉ ବିଜନେସ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ କରିପାରୁଛି। और उनको हाइफर की तरफ से, उसका की तरफ से मैम एक घर दिया गया था। इस घर को वो यूज कर रही है पोल्ट्री रखने के लिए, जिससे उनका पोल्ट्री का जो डैमेज था वो भी कम रहा है, उससे उनका सेल भी बढ़ा पा रही है, उनका हाइजीन भी मेंटेन हो रहा है।
ମୋ ଘର ଦେଖିକି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ଚାଷ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା, ମାନେ ବିଜନେस ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। और ये जो पोल्ट्री रख रही है उसको ये एक मॉडल बना के रखी है ताकि वो दूसरा लोग भी आके उसको देखते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं और ये उसको प्रमोट भी करती हैं कि जैसे उन्हें खुद के लिए जो इनकम कर पाए हैं पोल्ट्री से, वो दूसरों को भी बताती हैं उस बारे में। ସେ ଯୋଉ ମୋର ମାନେ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଜ ରୋଜଗାର ମାନେ କେମିତି ଘରେ ବସିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ରୋଜଗାର ଟା ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରୁଛି, ସେଥିରେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ उसका हाइबर को धन्यवाद देवी। वो जो दीदी लोग आके उनका घर देखती हैं, उनका पोल्ट्री मॉडल देखती हैं, वो लोग भी खुश होती हैं और वो भी पोल्ट्री में इंटरेस्ट लेती हैं और वो लोग भी पोल्ट्री रखना शुरू की हैं। इसलिए वो हाइफर को और उसका को धन्यवाद देती हैं। I would just like to add, thank you Rajiv ji for a very good translation. And दीदी आप भी एक एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव पोल्ट्री फार्मर के तौर से। दो चीज दीदी के साथ 2 साल से जुड़े हैं हमारे पार्टनर, और मैं कहना चाहूंगी दैट दीदी सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन, उनके ही नहीं पूरे नॉर्थ उड़ीसा में जितने हम लोग पोल्ट्री फार्मर एज वेल एज गोट्री फार्मर के साथ काम कर रहे हैं। एंड लोकल जो ब्रीड है हसली ब्रीड, उसको एक्टिवली एंगेज करके दीदी ने मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है, और इससे उन्होंने अपने फैमिली के इनकम को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। ट्रेनिंग एक पार्ट है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स और स्ट्रॉन्ग फोकस दीदी का इन 2 सालों में डिजीज मैनेजमेंट और हाइजीन प्रैक्टिसेस में रहा, जिससे बहुत हद तक, बल्कि जीरो, उनके जो 100 पोल्ट्री है फार्म, उसमें से दीदी के मोर्टेलिटी रेट 0 है, पिछले साल भी और इस साल भी। शुरुआत के दिनों में जैसे दीदी बोल रही थी, उनको चैलेंजेस आए थे जब उन्होंने बैकयार्ड पोल्ट्री ऑपरेशन शुरू किया था, जैसे कि इनकंसिस्टेंट इनकम, प्रोडक्टिविटी भी लो था, और मार्केट एक्सेस भी बहुत कम था, और दीदी के नॉलेज और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आइडिया इतना नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दीदी को जो ये सारे चैलेंजेस हैं उसको उन्होंने ट्रेनिंग के तौर पे ट्रांसफॉर्म किया, जहाँ पे एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से दीदी को गांव स्तर में, जमीनी स्तर पे हम लोगों ने इम्प्रूव्ड ब्रीड के बारे में बताए, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताए हैं। दीदी के घर में जाएंगे तो उनको एक शेड्यूल मिलेगा कब कहाँ देते हैं, प्रॉपर फीडिंग और डिजीज मैनेजमेंट टेक्निक। ये 3-4 चीजों को दीदी एकदम मन और ध्यान के साथ 2 साल से दीदी लगी रही, और आज के डेट में दीदी लाइक वेरी प्राउड, वो फक्र के साथ शी इज एन एग्जाम्पल। स्टेट में भी उन्होंने फोरम में, गवर्नमेंट फोरम में कई बार मंच में दीदी ने कहा है, और उन्होंने बायोसिक्योरिटी मेजर्स जो है एक बेस्ट प्रैक्टिस है दीदी के फार्म में, जो इसी तरह से उन्होंने हेल्थ और क्वालिटी को इंश्योर किया है उनके पोल्ट्री प्रोडक्ट में। और I am proud to share that Didi, all these technical, modern, scientific practices जो दीदी adopt की हैं, like established a good reputation among the buyers, and because of this उनके जो income में एक significant change आया है। तो यही कहूंगी, और थैंक यू दीदी, काफी दूर से आए हैं, और केउंझर डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में दीदी हमारे पार्टनर के साथ बैठे हुए हैं। और थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी. Her model is truly an example because she not only scaled her business starting with 10 poultry to 200, but she maintained all the biosecurity measures. She learned all the new techniques and all the scientific things that need to be done as a poultry farmer, and she really elevated her income profile. She not only helped to repay the bank loans that she had taken, but she had also helped to educate her children. So that is something truly inspiring. And thank you for sharing the experience with us. Thank you. So now, Thank you. now let me welcome another inspiring entrepreneur, Dr. Renuka Diwan. She is the co-founder and the Chief Executive Officer of BioPrime.
Bioprime is a Pune-based company that develops biologicals using small trigger molecules. And under her leadership, Bioprime has grown its workforce, its product range, and operates across India. And I believe it is expanding in Southeast Asia and the US. So let's meet Renuka ji. Welcome to the webinar. Kindly share your experience. How was your journey as an entrepreneur? Hi, everybody. Wish everybody a very, very happy Women's Day in advance. And thank you, Anjana ji, for arranging these conversations. I've been listening to all the women share their stories. I mean, it's quite inspiring to hear, women from every strata of life, aspiring towards development, towards independence, and towards financial growth. And I think, sharing of these stories is so important because that builds aspiration, that shows people the way. So thank you so much for organizing, the session of story sharing. Um, about Bioprime, so we started Bioprime in 2016. We work on developing different kinds of biologicals, which help make crops climate resilient. So, obviously, women in agriculture are very poorly represented. मतलब जितने workforce women हैं, उसमें ज़्यादा workforce women are engaged in labor or more, labor-oriented activities than they are engaged in management or decision-making activities. So women का representation agriculture में पहले से ही बहुत कम रहा है. वॉइस वुमेन को एग्रीकल्चर में पहले से ही बहुत कम मिला है. So, when we started, I often did find myself alone in like the lone women in a room full of men. But I look at it as an opportunity. I look at it as an opportunity to, make it easier for other women who come after me कि उनके लिए ये जर्नी और आसान कैसे हो. And that, that image has stuck with me so much that being one of the only women in a room of 150, 200 men in agriculture leadership conferences also, that it's kind of, बहुत consciously हम Bioprime में we make efforts to have women representation. So 70% of our R&D is led by women. Project leaders in our R&D are women. Some of our division leaders in agriculture are also women. I mean, in our R&D are also women. So we take a very conscious effort कि कैसे हम इस situation को और बेहतर बनाए हमारे side से. So these are some very conscious I would say steps that we take to make sure that we provide an opportunity for young women to come into agriculture, to come into science. And we also are very conscious and passionate about training these, women to become leaders. So we, groom people to take up leadership position. We groom young women, especially to take up leadership positions as the company grows. And we are very, very proud that हमारे system से grow होके women are now taking up leadership positions in Bioprime. So हमारे साइड से some of these initiatives हम बहुत consciously करते हैं, and it is and we believe that it's kind of a ripple effect. Jab we have these representations seen, when we have these representations heard, it inspires more people to do the same. It inspires more women to think like that, right? Matlab, I very conscious. I say this very often. So and I can't say it more. Whenever we think of a scientist, whenever we say doctor, whenever we say engineer, जब तक हमारा मेंटल पिक्चर वो व्हाइट कोट डाले या कोट डाले हुए मैन का जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा, राइट? सो हम बायोप्राइम में वो कॉन्शियसली करना चाहते हैं दैट व्हेनेवर एनीबॉडी सेज
science, whenever anybody says technology, whenever anybody says research and development, mental image of the team leading it should not be of men. So वो हम बहुत consciously करने की कोशिश कर रहे हैं BioBrand के अंदर. And I think stories like this will definitely help and inspire other people to kind of do the same. So from our side, in terms of initiatives, we try and do as much as we can. And if there are any opportunities or any other ways that we can contribute to this cause, we're always listening. So give us a shout out in what we can also, help do better. Thank you, Renuka. Thank you so much for your inputs. And it's true that whenever we think about a doctor or a scientist or whatever it is, there is always a man who comes into a picture. And I think in the earlier textbooks also, Papa is reading newspaper, Amma is making food in the kitchen. So that should change basically. Our perceptions should change. Our social conditioning should change, and we should think that as a position and not as gender-wise. We should not think about it. We should be celebrating achievements rather than gender-based achievements. So let's hope one day we can make sure that this discrimination, these gaps do not exist. Thank you, Renuka, once again. And then I just wanted to add one small thing. Like हम हमारी side से बहुत subconsciously कुछ चीजें करते हैं. And this also I keep saying wherever I have an opportunity to say this. And since today you've given me this opportunity, I'll say हम हमारी साइड से क्या कर सकते हैं. जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो at age 8, age 10, girls and boys think they're equally intelligent. They're all dreaming to be astronauts, they're all dreaming to be doctors, they're all dreaming to be engineers. Somewhere around age 13, 14, girls stop thinking that they can be presidents, they can be scientists, they can be astronauts. Boys keep thinking that. Because हम हमारे साइड से, and you picked up on the social conditioning, हम हमारे साइड से ये social conditioning देते हैं. Even when we are buying toys for our kids, we need to be very conscious that हम equal opportunities दे सारे aspects of their childhood of development explore करने के लिए. लड़की होगी तो art and craft का set, boy होगा तो मैकेनिक का set. ये बैरियर ब्रेक होना चाहिए. And somewhere these things matter, these things kind of catapult, these things make up for a large percentage of social conditioning. So that's what I wanted to add. Thank you for picking up on the social conditioning. Thank you, Renuka. And now let's move on to another special guest. She's from Andhra Pradesh. Her name is Kumari Kalyani. And we, in this webinar, we have not only selected entrepreneurs from different backgrounds, but from different regions. So we get to hear all the languages as well. So here she will be talking to us in Telugu, and she will be sharing her experiences. Swagatam, Kumari Kalyani. అందరికీ నమస్కారం మేడం. ముందుగా అందరికీ మహిళల దినోత్సవం. నా పేరు కళ్యాణి, మాది కేసేపల్లి గ్రామం, నార్పల మండలం, అనంతపురం జిల్లా. నా భర్త రైతు, అలాగే మగ్గం పనులు కూడా చేస్తారు. 10 రోజులకు వచ్చేసి 8,000 సంపాదిస్తాడు. నేను టైలర్ని. అలాగే రోజుకి 2 లేదా 3 జాకెట్లు కుడతాను, మా ఊర్లో వాళ్ళవే. రోజుకి 200 సంపాదిస్తాను మేడం. Yeah, now I am translating she speak in Hindi. So हमारा कल्याण दीदी ने नारपल मंडल से आया है. उन्होंने नारपल एफपीओ में एक मेंबर है और उन्होंने कहा है कि उनका जीवन का खेती बाड़ी करते हैं और उन्होंने टाइपिंग भी करते हैं और उन्होंने सैलरीज भी वेविंग करते हैं और उन हर दिन 200 से 300 तक उन्हें कमाते हैं. ఇద్దరం సంపాదించుకునే జీవనం కొనసాగించడమే కాకుండా ఒకవేళ ఆరోగ్యాలు బాగలేకపోతే అప్పులు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. 4 నెలల క్రితం టీజీపీఎల్ ఆఫీసర్ హసీనా గారు, సిఎఫ్ రత్నమ్మ గారు ఎఫ్ఐజి సమావేశానికి హాజరయ్యాను.
మీరు మాట్లాడండి. उन्होंने बता रहा है कि 4 महीने पहले उन्होंने एक एफआईसी मीटिंग को अटेंड किया है और वो मीटिंग में ट्रांसफॉर्म के बारे में बता चुकी है और वो ट्रांसफॉर्म के प्रोजेक्ट में जो केव है उन्होंने ट्रेनिंग लेना है वो पूरे उनका सीएफ ने बताया है और उन्होंने केव के ना सिलेक्ट किया है और उन्होंने ट्रेनिंग भी ले चुकी है మార్కెటింగ్. అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా అయితే నేను మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాను. చౌడకాయలు అలసందలు అలా తీసుకొని రైతులతో లోకల్ అయితే రెండు రూపాయలు మిగులుబాటు చూసుకొని అలాగే స్విగ్గీకి అయితే 5 రూపాయల లాభం ఉంటుంది. उन्होंने बोल चुकी है कि उन्होंने केव्स के ट्रेनिंग लिया है. वो ट्रेनिंग के एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग उन्होंने एंटरप्राइज डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग ले चुकी है और उन्होंने खेती बाड़ी करते हैं और उनकी सब्जियां को लोकल बायर से बिका रहते हैं और उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल बायर से हम पीजीपीएल का लिंकेज किया है. लिंकेज करने के बाद उनको 3 से 5 रुपए तक ज्यादा कमाते हैं. అలాగే నాలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి డాక్టర్ దర్శిత మేడం గారు నాకు కేవగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ట్రైనింగ్ తీసుకొని బయోసెక్యూరిటీ గురించి కూడా రైతులకి ఇప్పుడు ఎలాంటి భయం ఫస్ట్ భయపడేదాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి రైతులకు చెప్పడం కూడా బాగా ముందరికి వెళ్తున్నాను. उन्होंने बोल चुकी है कि उन्होंने गांव से आए हैं और गांव में लड़कियों को बाहर नहीं भेजती है. उन्होंने पहले जो ट्रेनिंग आ चुके हैं जब उन्हें बहुत डरते थे कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने थोड़ा चेंज किया है उनका लाइफस्टाइल और उनको देख के दूसरे गाँव वाले भी ज्यादा इंस्पायर होके संगम में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं. అలాగే హసీనా మేడం గారు చికెన్ పికిల్ గురించి బాగా డిమాండ్ ఉందమ్మా మీరు చేసుకోండి అని సపోర్ట్ చేసినారు. అలా మేడం దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని నేను ఫస్ట్ 2 కేజీలతో స్టార్ట్ చేసినాను మేడం. उन्होंने केव्स के ट्रेनिंग के बाद एंटरप्राइज डेवलपमेंट के यूनिट भी स्टार्ट किया है. उन्होंने पीजीपीएल के सहाय से चिकन पिकिल का ट्रेनिंग भी ले चुकी है और स्मॉल स्केल से वो बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी है और उन्होंने जो बाकी एफपीओ मेंबर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देती है. అలాగే ఈ ఫర్ నవజీవన్ ఫండ్ తీసుకున్నాను. 5,000 ఫండ్ తీసుకొని వ్యాపారానికి కొంచెం మిగిలించుకొని కోళ్ళు కూడా తెచ్చుకొని అలా ఒక్కొక్క కోడి మీద లాభం 100 రూపీస్ పెట్టుకొని అమ్మేసినాను 10 రోజులకి. और उनको प्रोजेक्ट की तरफ से 5,000 का लोन भी मिल चुकी है. वो लोन का पैसे से वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट भी करते हैं और पोल्ट्री भी रेट करते हैं. కోళ్ళ పెంపకం మాత్రమే కాకుండా నేను నేర్చుకున్న చికెన్ ఊరగాయ 10 మంది మహిళలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాను. అలాగే నేను మహిళా మార్ట్లో కూడా సేల్ చేస్తున్నాను మేడం. और उन्होंने स्मॉल स्केल में बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी है और जो मंडल में सबका महिला मार्ट है उनसे लिंकअप होके उनका प्रोडक्ट्स भी उधर डिस्प्ले कर चुकी है और ऐसा उन्हें अलग अलग तरीकों में उनका इनकम को बढ़ाती है. ఇప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బంది భద్రత అయితే లేదు అనే భయం తొలగిపోయింది నాలో నుంచి. ఇంకా 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 సంపాదించుకుంటాను మార్కెట్ లెవెల్ గా చూసుకొని చేసుకొని ఏదైనా కానీ ముందుకు వెళ్తాననే ధైర్యం నాలో వచ్చేసింది. और उन्होंने बोल चुकी है कि ऐसा उन्होंने आगे बढ़ती है और उनका फाइनेंशियल भी दिक्कत क्या नहीं है और उन्होंने ऐसा अलग अलग तरीकों में इनकम भी बढ़ाती है और दूसरे लड़कियों को भी उन्हें इंस्पायर करते हैं और ट्रेनिंग भी देती है कम्युनिटी में. ఇంతకు ముందు గృహిణి ట్రైలర్ గానే మిగిలిపోతాననే బాధ చాలా ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారవేత్తగా నా భవిష్యత్తుని స్వయంగా తీర్చిదిద్దుకుంటున్నాను. उन्होंने पहले टेलरिंग करते हैं और घर के काम और खेती बाड़ी करते रहते हैं और ऐसा एफपीओ में ज्वाइन होने के बाद पीजीपीएल इंटरवेंशन से उन्होंने अब टाइलर से अब एंटरप्रेन्योर तक बढ़ चुकी है. నా పిల్లల భవిష్యత్తుని నా కూతుర్ని డాక్టర్ చేయాలని అలాగే నా కొడుకుని ఒక వృత్తిలోకి తీసుకొని రావాలని నా కళ. और उनका ये है कि उनका बेटी को डॉक्टर बनाने का और उनका बच्चा को अच्छा एक पोजीशन में देखने का इच्छा है. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మహిళను ప్రోత్సహిద్దాము అలాగే ఇంకా ఇంకా నా మాదిరిగా ఇంకా మంచిగా చేయాలని మహిళలందరూ ముందరికి రావాలని నేను చాలా సంతోషంగా కోరుకుంటున్నాను.
और उन्होंने कहती है कि उनके ना जो गाँव में और पढ़ाई करके घर में बैठते हैं वो महिलाओं को भी आगे बढ़ना है और कम्युनिटी में आपको उनका जो డెసిషన్ మేకింగ్ और లీడरशिप भी बनना है. ఈశ్వర్ వాళ్ళు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా 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 ధన్యవాదాలు మేడం. और उन्होंने थैंक्स बोल रहे हैं ताकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि उनका एक्सपीरियंस को शेयर किया. थैंक यू. Thank you, Kumari Kalyani. She's truly an example of how an institutional support, how training can change their lifestyle. And she has diversified our income and let all her dreams come true of giving a proper education to her children and seeing them in a very good position. So thank you, Kumari Kalyani. So now we have another guest. Her name is Komal Shah. She's the director of SML Limited. At SML, Komal has been overseeing the research, development, intellectual property, and introduction of new crop solutions in crop protection, crop nutrition, biologicals, and biostimulants in India and internationally. So, hi, Komal. Please share with us your experiences of being a woman in the corporate world, of being a leader in the corporate world. Yeah, good morning, Anjana. Thank you very much for having me here. It is a pleasure to be here amongst so many inspiring women leaders in agriculture, not only from the corporate world but at the rural level. एक बड़ा ही आनंद होता है ये जानकर कि हमारे देश में विभिन्न भागों में जो महिला है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो अपने बल पर अपने आत्मनिर्भरता पर आज आगे कदम बढ़ा के अपने खुद का भविष्य लिख रही है तो ये बहुत ही बड़ी बात है. From the corporate world, I would like to say, as a woman in agriculture, working in the agriculture industry is as I think Dr. Renuka Diwan also pointed out, there are not that many women there, but I'm sure in times to come there will be more. We have similar resonating stories where we have a lot of women-led teams and complete women teams in R&D and IP, where women leaders are taking, active involvement in developing solutions for agriculture. As a company, SML and SUMIL, as director of SML and SUMIL in India and also for the SML international business, I have I wear multiple hats in terms of the corporate responsibility of driving the business as well as the development, the R&D and the development for the organization. Today, SML and SUMIL are working on one of a very important aspect in agriculture, which impacts all of us, largely women. Climate change, जो जलवायु परिवर्तन है, has a very big impact not only on agriculture but also on human health. And when it comes to human health, women are most largely impacted, women and children. When you look at our country and the statistics in India especially, more than a very large percentage of women in India are anemic. So women are not only, as we understand, have been left behind in the socioeconomic status quo, but are also faced with a double challenge, I will say, of taking care of their own health because of this, widening gap of, depleting nutrition in the food worldwide and largely in India. And this impacts not just their ability to function, but the ability to take care of their own children and their own families. The GDP loss in India alone due to micronutrient deficiencies is to the tune of 28,000 crores. So it's a massive loss for the country. And as an entity, we work on soil health to improve the nutritional quality of the food, which impacts finally the food consumed by all those who are growing it and all those who end up consuming it. This impacts children's well-being, their physical and their mental growth. बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास आज देश में 5 साल की कम उम्र के बच्चे जो हमारे देश में है, देश के कई विभिन्न भागों में है, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल से कम है, 50% जो ऐसे बच्चे हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास आज ठीक तरीके से नहीं हो पाता
और वो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे, उनकी ग्रोथ पे हर तरीके से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और भले सरकार आज जुड़ के ये कुपोषण को मिटाने की कोशिश कर रही है, पर ये सारी चीजें हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, मिट्टी की सेहत से जुड़ी हुई है। और जो 50 या 70 साल से जो कहे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग हुआ है, असंतुलित उपयोग हुआ है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो आज तक होता रहा है, उसकी वजह से ये कुपोषण एक और कारण है जो बढ़ता जा रहा है। ये समस्या इतनी बड़ी है, तो इसके ऊपर हम बड़े जोरों शोरों से देश भर में काम कर रहे हैं। आज करीब फील्ड में अगर भारत देश की बात करेंगे तो करीब हमारी टीम जो है, करीब 800 जन की जो टीम है, वो लगातार इस चीज पे काम कर रही है। और हर साल हम किसानों को जाके हर दिन, शायद हर दिन जाकर किसानों को ये बताते कि है कि संतुलित खाद कैसे दिया जाए। खाद उसे कहते हैं जो आपकी मिट्टी की सेहत सुधारे, खाद उसे कहते हैं जो पोषण बढ़ाए, पोषण युक्त पैदावार कैसे करे। ये किसान की एक सबसे बड़ी आज समस्या है, और किसान कई बार अपने देश में कई जगह पर इस चीज से वाकिफ नहीं है, उसे इसका पता नहीं रहता है, और उनका खर्चा भी बढ़ जाता है, और जो पैदावार भी होती है वो कमजोर होती है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर हम आज काम कर रहे हैं देश में। वी आर वर्किंग on not only improving soil health, but improving farmer income, improving productivity, improving quality productivity, that too with an impact on human health, which is a very, very burning need for the nation. So hum sabhi, I congratulate all the women farmers and entrepreneurs who are here today and working so actively in this sector, which has been largely dominated by men. I don't believe that one is better than the other. I believe that women have their own strengths to take things forward and make a difference for themselves and for the world at large. So thank you very much. It was a pleasure being here, and I really appreciate the opportunity to connect with all of you here today. Thank you. Jai Hind. Thank you, Komal. Thank you for joining us and giving an insightful inputs into the problems of malnutrition and soil health. And it's really a shocker to find that this is the GDP loss because of something like nutrition. So great work going on your part, and keep doing the great work, and make us all proud. Coming from a woman. Thank you. So now we have Dipanvita Chakrabarti. She is a social and environment impact expert. She has led a team of practice area experts that work towards bringing on intersections of food and nutrition security. She's passionate about the causes of education and gender equity. And tell me, Dipanvita, how in your corporate role you have nurtured the rural women ecosystem? Please share your experiences with us. Thank you. And first of all, I would congratulate everybody who's spoken, and it's been just so inspiring to listen to everyone and the stories that unfolded. And I think I'm sitting here at this juncture on this conversation where I can possibly sum it up in a way, because the proof of the pudding has been shared by the Didis who we listen to. And I've had a very good opportunity to work with them, be part of the ecosystem from very, very close quarters, of also working with the Passing Gifts team and understanding the ecosystem from that standpoint with that partnership. So just taking a step back, as we look at the corporate ecosystem, of course, we are always looking at business cases. We are looking at creating impact at scale, and to understand it in its whole entirety, and also kind of creating a more multi-pronged approach. And my very recent role was in a food and ag organization. So I can tell you that, the complexity of taking the food from the farm to the table is just so nuanced and so multifold that it requires a multi-pronged approach. And while for a lot of such development work, a philanthropic grant is what is the enabling factor from a resource standpoint to be able to deploy
resources to get a lot of this work done. I think at a strategy level, some of the things that we very consciously thought and did as a part of our work has been to call it out as part of our organization's kind of purpose, if you will. So to say that when we do an agri-related intervention, look at the fact that 50% of the participants have to be women. So when we call those things out right up front, then it creates a kind of a pathway where the entire thought process and the mindset of people who are part of this, including the business leaders, kind of move in that direction. And therefore, I would like to highlight a few things when it comes to creating a strategy around getting such work done and bringing everybody together. There are things related to skill development, confidence building, financial independence, and systemic support, which play a massive, massive role in moving the needle forward. And in multiple areas of work in terms of geographic locations, and I've had the privilege to work, India and overseas, we have seen that really taking that multi-pronged ecosystem approach is what helps, because this is a supply chain conversation, right? Be it any commodity, and we bring in people together, it really has to enhance that particular aspect. So I'll, for the interest of time today, I'll touch upon three key aspects. Some of the things that has been very close to my heart personally has been about leadership development programs. We in the corporate world, we have had privileges to go through various programs to really change our trajectory and to bring that on in the rural ecosystem as it relates to agriculture entrepreneurship or entrepreneurship in general, to be able to develop tailored programs that focus on very key aspects and very focused and very sharp aspects of decision making, problem solving, negotiation, and financial literacy. And the stories that we heard from the Didis really emphasize on some of these aspects that play a key role in creating that enabling environment. Second, in leadership development for that rural ecosystem, I would say is a big part played by sponsorship, not only by the organization, but also bringing in the ecosystem, be it on the input side, be it the government, be it actually enabling local community-based organizations to play a part in the community for women. Because those leadership challenges and progression are real. We have all seen that. I mean, Odisha, Andhra, at least, for this conversation, I can say those. It takes a patience, it takes a lot of courage, and it also takes times. At times one has to really pause and say, oh, okay, we need to really course correct and go ahead, and everybody has to move along together. And the other one is very important and critical, I think, is a role model visibility. What we heard from the Didis today is really something that is anchoring that. And when these kind of stories are showcased in forums like this or elsewhere, this actually also helps to create a ripple effect. The amplification of it inspires corporate leaders across, and somewhere bring some kind of normalization for these transitions. One of my favorite stories, and again, I'll dial back to Orissa. When COVID was happening and there was this reverse migration that was going on, we heard this very heartening story of some of the Didis from the Orissa poultry project, where when the men in the family were not able to contribute to the income generation activities of the family, the women who were already rearing poultry were actually taking the leadership role in the family to not only feed themselves, and that's the beauty of being a woman, and I think all of us can give a pat on the back to all of us, that we are all about sharing and nurturing. So if we have resources, it's not something that we only use for ourselves, but also share it when there is a distress situation, what have you. And the women in the community, they actually went around sharing the
the poultry, and that became a source of nutrition, that also became a source of some level of continuity for the income that could not be really generated as part of the family by the men folk who had to go back to their hometowns from reverse migration. And the third, and I'll bring these two things together, I think the couple of things that are also important to emphasize here as it relates to leadership, is to really provide that entrepreneurial and business incubation support. So I think when we have designed programs, when we have gone ahead and have conversations with potential partners or even current partners, I think some of the things that have been at the fore has been how do we provide market linkages for the program that we are driving, right? So if we are providing some seed funding, some resources, training, development, all of that, but then what is the downstream for these women to be able to sustain them? A corporate, I mean, as the world is, a corporate or a private sector cannot be there to handhold for posterity. So it's important to also create those models, and I think that's becoming increasingly becoming a part of the conversation and ecosystem. And again, when we hear stories from the community agrovet entrepreneurs today from both Andhra and Orissa, those things are underscored, that it has to become a model which is something that they can carry on their shoulders on their own and seek support when it is required, but predominantly really do that on their own. And then it also kind of talks and brings in the conversation around creating microfinance and investment access, as various groups like this are moving and progressing in their direction. And we cannot talk about it without talking about digital inclusion, which is, I feel, as something, as of course we are talking about drone didis, that there's just multiple interventions and schemes that are going on. But at the same time, there is a need to really look at the real world and create create an opportunity for this digital divide that is so rampant in especially the rural ecosystem, to really kind of go and I think the corporate world, because the agri commodities companies, for example, or input companies, or even the downstream companies who can become a potential buyer, or for them to become integrated into an e-commerce platform whatsoever, there is a need to look at tech enablement and tech training. That also includes access to bank and credit and the entire, even the remote work and for example, understanding how to converse with people. And today it's been just so amazing to have people from all walks here, and women from such diverse background come in on this Zoom meeting and talk about it. So I think this is a great example once again. And I'd just like to end by saying, we talked about community-based leadership. We talked about socio-cultural norm. Just this very week, just a few days back, I was at IIT Delhi on an interview panel, kind of for aspiring students who are going to get the next course. And one of the girls that we were interviewing, she was talking about generative AI and talking about how she uses ChatGPT, and she referred to ChatGPT as a man. She kept saying he. ChatGPT tells me this, and then we kind of curiously asked her, why do you refer to ChatGPT as a he? It could be, I mean, anything, or why does it come to your mind? And that's the kind of disruption I think we need to make for ourselves as well. And I think I'll just end by saying that change begins with us wherever we are. Is it whether we're at a corporate setup, we are in the development setup, we are in the shoes of the Didi. When we really take control of our agency and say that, oh, we are not going to just settle for anything less, I think that's where change starts to happen and really champion each other. So I think I just end by saying that. Thank you so much for the opportunity. It was just wonderful to be here.
Thank you, Deepanvita. Thank you for your insightful intervention here. And as you said that there should be a change in our mindset. And there should be an enabling ecosystem for the women to come forward in terms of leadership, in terms of bridging the digital divide and letting them know more about entrepreneurship. So thank you, Deepanvita, for your thoughts on this. And now we have another entrepreneur who was supposed to join us, but she couldn't. But she has an important message to us, which will be played by Agri Today team. And she is Sheikh Razia, and she is the founder of Bastar Food Firm. And her initiative, Bastar Foods and Consultancy Services, launched in 2018, focuses on improving food technologies and empowering rural women in tribal regions across Chhattisgarh and neighboring states. So let's hear it from Razia. So I hope Agriculture Today team, do we have the audio recording ready with you? I think there is some kind of technical issue there. So let's move on to another speaker with us. I have saved the best for the last. It's not that all yours are not the best, but we have a representative from SEWA, which is Self-Employed Women's Association. And SEWA is the single largest central trade union registered with a membership of over 3.2 million poor self-employed women workers from the informal economy across 18 states. And I think we are about to play the audio. Yeah, sorry, Megha. Just let's first listen to this audio and then I'll come back to you. Please play the audio. We are not able to hear it. I think you have not unmuted. Agree Today group. Please unmute. क्षेत्र में उगाए जाने वाले रॉ मटेरियल का वैल्यू एडिशन करके उससे बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और मार्केट में वो लॉन्च करती हैं। आज हमारी संस्था में करीब 10 बालिकाएं जो है वो सतत रूप से कार्य कर रही हैं। ये बालिकाएं विभिन्न गांवों से आई हैं जिन्होंने 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई या फिर कुछ डिग्रियां ली हुई हैं, बट नौकरियां नहीं मिल रही। तो फूड टेक्नोलॉजी में हमने जो टेक्नोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ा था, हम उसे सिंपल उनके ही लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि सीखने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। अगर आप में सीखने की एक ललक है तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को हंसते हंसते सीख सकते हैं। महिलाएं इनका बेस्ट एग्जांपल हमारे घर की महिलाएं, हमारी माताओं, हमारी दादियों को हमने देखा है कि बिना शिक्षा लिए भी उन्होंने बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को संभाला। हम आने वाली पीढ़ी के लिए काफी अच्छा उन्होंने नींव रखा। इसी को हमने अपना रोल मॉडल बनाते हुए आगे के लिए हमने विजन और जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेट किए हैं। आज हमारी संस्था में एग्रीकल्चर में देखा जाए तो हम पुरानी विधियों से जो चावल उगाए जाते थे, उन्हीं चावलों को ढेकी एक उपकरण होता है, उससे हम उसका प्रोसेस करते हैं और वही प्राकृतिक रूप से जो चावल होता है उसे हम लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को पुराने जमाने के जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट थे वो वापस मिल सके। साथ ही हमारे पास अन्य किसानों से जो हल्दी आता है या जो दालें आते हैं उनका प्रोसेस करते हैं और लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं।
फॉरेस्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट में जो महुआ है, इमली है, काजू है, चिरौंजी है और भी जो फॉरेस्ट के हर्ब्स है जिसमें सफेद मूसली हो जाता है, इनसे कई उत्पाद बनाते हैं और उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हम इसे बेचते हैं। जो आमदनी होती है उस आमदनी में का एक हिस्सा जो हमारे यहाँ संस्था में काम कर रही बालिकाएं हैं उन्हें हम एज अ सैलरी देते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके और अपने घर के जो खर्चे हैं उसे भी वो पूरा कर सके और उनके आने वाले टाइम का जो है वो सदुपयोग हो सके। हमारे पास आज लगभग 350 से अधिक महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया है और वो अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने फूड टेक्नोलॉजी पे बहुत सी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है। आज भी हमारी संस्था बहुत सारे किसानों के साथ जुड़ के बहुत ही सहज तरीके से फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स का जो प्रोक्योरमेंट का काम देखती है या संग्रहण का जो काम देखती है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से आज लंदन जैसी बड़ी कंपनियों ने हमारे साथ हाथ मिलाया और हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट जो कि पूरे भारत में एक नया प्रोसेसिंग यूनिट होगा जो महुआ जैसे फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस पे काम कर रहा होगा। इसमें महुआ के लड्डू, महुए की कुकीज, महुए की चाय, उसके बाद महुए के चॉकलेट, ये कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जाएंगे जो खाने में स्वादिष्ट भी हैं, साथ ही काफी न्यूट्रिशियस भी हैं। तो इन प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पे ज्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का काम देखते हैं। साथ ही जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्हें हम इंटर्नशिप भी देते हैं ताकि वो अपने एजुकेशन को और स्ट्रांग बना सके और बस्तर का नाम देश के सभी कोनों में एक पॉजिटिव वे की एक पॉजिटिवली लिया जा सके, इस तौर पे हम काम कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम महिलाएं होकर ये काम कर रही हैं। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस करने की एक चाह होनी चाहिए। अगर हमने करने की ठान ली तो हम बंजर जमीन से भी पानी आराम से निकाल सकते हैं, बंजर जमीन को जंगलों में बदल सकते हैं, इतनी ताकत हम रखते हैं। 9 महीने अपने कोख में एक शिशु को रखकर उसे हम बाकायदा जब दुनिया में लेकर आते हैं उसके बड़े होने तक का ख्याल रखते हैं और एक नई सृष्टि का सृजन करते हैं। जब हम इतना कर सकते हैं तो ये तो स्टार्टअप है जहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बस उन सुविधाओं को यूज करने की बस देरी है। अगर हम उसे प्रॉपर वे में यूज करें तो डेफिनेटली हम लोग अपना नाम चरितार्थ कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हो चुकी हैं, झांसी की दुर्गावती हो चुकी है, कई मुगल शासिकाएं हो चुकी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नाम किया है इतिहास में। आज के दौर की बात करें तो बेंगलोर में मजूमदार मैडम है जिन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। डॉक्टर्स में भी देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में भी कई डॉक्टरों ने अपना नाम किया है। तो ये सारे अपने अपने क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि किसान जो हमारे लिए सोना उगा रहे हैं अगर वो लाइमलाइट पर आते हैं डेफिनेटली उनका भी नाम लोग जानेंगे, आने वाली पीढ़ी इनको भी सलाम करेंगे। इस स्टे लाइक मेरे इसी सारे जो शब्द है उसके साथ मैं अपने आप को यहाँ पर विराम देना चाहती हूँ। आई होप कि मेरे मैसेज आप तक पहुंचे। और अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस कीमती समय में मुझे भी इन्वॉल्व किया। हालांकि मेरा शेड्यूल महिला दिवस पे काफी टाइट चल रहा है, अलग अलग जगहों से कॉल्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। बट मेरा ये जो मैसेज है तमाम महिलाओं के लिए है, अगर भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद। Okay, thank you, Sheikh Razia ji. She's unfortunately she couldn't be with us today here, but she had a truly inspiring story. So we had covered her work in the upcoming edition of Agriculture Today. So how she was confronted with the confronted with the possibilities of how the tribal women, the children from the tribal area were preferring to go to become the Naxalites rather than come. And that was their biggest ambition. So she's brought out this idea of how they can convert the forest produce into food items that are acceptable to the urban community. And they have created this big business. And she's training women, she's making them entrepreneurs. So that is basically what she's doing. So now coming back to Megha Desai, she's from Seva. And as I've mentioned, Seva is one of the largest organization who are helping women to stand on their 2 feet and helping them in every aspect. So Megha Desai ji, please join us and enlighten us with your work and how we can spread the word. Thank you. नमस्ते सभी को।
और थैंक यू एग्रीकल्चर टुडे अंजना जी आपको इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ 32 लाख जो इनफॉर्मल सेक्टर की बहनें हैं, तो उनके वॉइसेस लेकर यहाँ पे आई हूँ। तो सेवा में हम शायद काफी लोग जानते होंगे कि सेवा मेनली ट्रेड यूनियन है, बट ट्रेडिशनली जो ट्रेड यूनियन है वो मेनली ऑर्गेनाइज करते हैं मेंबर्स को टू फाइट अगेंस्ट एम्प्लॉयर। बट ये यूनिक हमारा एक स्ट्रेंथ है, ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ है, जो पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करता है। जो इनफॉर्मल सेक्टर की बहनें हैं उनको ट्रेड वाइज ऑर्गेनाइज करके उनके जो ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस है उसके ऊपर काम करता है। जो दो हमारे ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर। तो अभी हमारे 32 लाख बहनें हैं और 18 स्टेट से हैं। और उसके अलावा हम काम करते हैं सार्क कंट्रीज में भी काम करते हैं। जो मैंने बताया 32 लाख बहनें, उसमें से ऑलमोस्ट 54% जो बहनें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। जो 18 स्टेट से हैं वो मेनली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है। सो अगर देखा जाए तो हमने ये 18 स्टेट्स में फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं। वो रजिस्टर्ड है या तो कोऑपरेटिव के अंदर या कोई और रजिस्ट्रेशन के अंदर। और थ्रू दीज ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ हम जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर कैंपेन हम 1989 से चलाते हैं। और अभी हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज, हमने सुना भी सही आगे के हमारे पैनलिस्ट से, तो क्या असर करता है। तो हमने अभी तक सुना है कि जो छोटे किसानों को क्या असर होता है, बट छोटे किसान क्या करते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। तो ज्यादा से हमने सुना कि बहनें एग्रीकल्चर में नहीं है, बट अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें तो खेती की जवाबदारी बहनों पे ही है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिशनली नॉन लुक्रेटिव माना गया है और इसीलिए मेल जो है वो माइग्रेट करते हैं। और पूरी किसानी जो है वो फैमिली फार्मिंग है, बट फिर भी बहनों के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फील्ड में देखे पूरे 4 से 5 घंटे धूप में बहनें ही काम करती है, अगर सोइंग का काम हो या कल्टीवेशन का काम हो, वीडिंग का काम हो। तो ये देखते हुए हमने पूरा जो फूड सप्लाई चेन है उसमें अलग अलग एरियाज में कहाँ बहनों को एकत्रित करके उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है उसको डेवलप करके उनके कलेक्टिव एंटरप्राइजेस हमने डेवलप किए हैं। अगर जो बहनों का अनुभव है वो अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा है कि बहनों में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है, एबिलिटीज है, बट अगर कलेक्टिवली कोऑपरेटिव्स और कॉन्फेडरेशंस में काम करे तो उनका प्रोग्रेस फास्टर होता है। और उनके लिए जो फाइनेंस है और इन्वेस्टमेंट है, उनको एक्सेस की जरूरत है, और ऐसा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट हो जो उनके पेस से चले और उनके स्केल से आगे बढ़े, which is more nurturing, which helps in building the nurturing of economies. सो बेसिकली हमारी बहनें ये देखती है कि ऑफ कोर्स एंटरप्राइजेस है, बट वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, बट उसके साथ साथ जो हमारे लोकल एरिया के जो प्रोड्यूसर्स है उनको भी बेनिफिट मिले। उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है, जो नेचर है, उसको भी हम कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट करें। सो ये जो बिल्डिंग ऑफ नर्चरिंग इकोनॉमी के थ्रू हमारे एंटरप्राइजेस बहनों के चलते हैं। अगर मैं फूड सिस्टम की ये बात करूं, तो फूड सिस्टम में अगर देखें तो हमने एग्री इनपुट सेंटर्स है, जो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है, उसमें जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर है उसके लिए बहनों के कलेक्टिव्स बनाए हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स बनी हैं। अगर हम जो टेक्नोलॉजी है, सो बहनों के तक कम पहुंचती है प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो कैसे हम टूल्स एंड इक्विपमेंट लाइब्रेरी बना के वो बहनों के थ्रू उसको रन करते हैं और मैनेज करते हैं। हमने एक बहनों का सोलर पार्क बनाया है जिसमें बहनों ने ही अपनी सोलर पैनल्स को लेके उसको एस्टैब्लिश किया है। अगर आगे मैं बढ़ूँ तो इंश्योरेंस है, जो हमने पैरामेट्रिक इंश्योरेंस करते हैं बहनों के लिए, और वो भी बहनों के थ्रू कैसे, बहन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू वो कैसे एक्सपांशन हो।
क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बेसिकली प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ लिंक करते हैं और सेल करते हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज है उसको। डेटा एंटरप्रेन्योर्स है क्योंकि हमें डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग फार्मर्स कैसे ले उसको करना है, तो ग्रास रूट बहनों को कैसे डेटा का इम्पोर्टेंस उसका एनालाइज करके कैसे फार्मर्स को वापस देना ताकि उसके ऊपर से डिसीजन ले सके। और एक प्रोड्यूसर लेड कंपनी है रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी जो हब एंड स्पोक मॉडल में काम करती है और लोकल डिसेंट्रलाइज वुमेन लेड सप्लाई चेन है। सो ये सारे मॉडल्स है जिसमें हमने काम किया है और बहनें काफी आगे आई है। मेरे साथ दो बहनें भी जुड़ी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गुणवंती बहन से कि आप आपका एक्सपीरियंस बताएं। गुणवंती बहन। નમસ્તે બેન નમસ્તે नमस्ते। બેન મારું નામ ગુણવંતીબેન ચંદુભાઈ મકવાણા ગામ કાવીઠા તાલુકો બાવરા જિલ્લો અમદાવાદ હું કાવીઠા ગામની રહેવાસી છું હું સેવામાં 6 વર્ષથી જોડાઈ છું સેવામાં જોડાયા પછી હું ખેતમજૂરી કરું છું ખેતમજૂર છૂટક મજૂરી કરતી હતી એમાંથી સેવામાં જોડાયા પછી હું મીટિંગમાં જતી હતી મીટિંગમાં ગયા પછી ચર્ચા થાય બધી ચર્ચામાં મેં કીધું કે મનમાં વિચાર આવ્યો કે અમારા ગામમાં ઘણા ખેડૂતો મોટી બધી જમીન વાળા છે મગ કરે તુવેરું બધું કરે છે તો હું પણ ઘંટી માગું ઘંટીની માગણી કરી તો સેવામાં સાથ મળ્યો મને ઘંટી લેવા માટે તો પેમેન્ટ નહોતું પછી 2 લાખ રૂપિયા મેં લોન લીધી સેવામાંથી 2 લાખ લોન લીધા પછી ઘંટી બધું આવી ગયું ઘંટી લાવ્યા પછી અમે 10 થી 12 બહેનો આમાં જોડાયા સેવામાં જોડાયા પછી અમે કામ ધીરે ધીરે ચાલુ કર્યું છે મહિને અમે અત્યારે 10 થી 12 લાખનું ટર્નઓવર કર્યું છે અને મહિને 7-8 હજાર મહિને અમને મળે છે દર મહિને 7-8 હજાર રૂપિયા અમને મળે છે પછી અમે અત્યારે હવે અમારે ઘઉંની સિઝન પણ બહુ સારી ચાલે છે તો અમે ઘઉંનો આટાની ઘંટીનો માગણી કરીએ છીએ તો અમારા ગામમાં લગભગ 600 ખેડૂતો જો સભ્યમાં જોડાયા છે એટલે અમે એવું વિચારીએ છીએ કે અમારા ગામને ખેતીની બધી આવક અમે બધી મગ તુવેર બધું અમે અહીંયા ખરીદીએ અને ગામના દાળ બાર બધું અમે અહીંયા સ્થાનિક દુકાનોમાં આપીએ અને ગામનો પૈસો ગામમાં ને ગામમાં રહે મારી સાથે નીતાબેન પણ જોડાયા છે તો તેમની સાથે મુલાકાત લો सो गुणवंती बहन हमारे पास टाइम इतना नहीं होगा, सो आई जस्ट ट्रांसलेट व्हाट शी सेड। गुणवंती बहन है और वो 6 साल से सेवा के सभ्य है, कावीठा गांव, बावड़ा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद से है। और वो उनका छोटा खेत है और बाकी के टाइम में खेत मजदूरी करते हैं। और उन्होंने बोला कि हम भी मूंग वगैरह उगाते हैं और हम खाते हैं खिचड़ी जिसमें मूंग की दाल यूज होती है। बट तकलीफ ये थी कि मूंग की दाल लेने जाए तो बहुत महंगी होती थी और मूंग हमें सस्ते में बेचना पड़ता था, छोटी क्वांटिटी थी, इमीडिएट पैसा चाहिए था। सो उस केस में हमने मांग की कि क्या हम अपने आपसे दाल बना सकते हैं, हमें 1 घंटी चाहिए। तो सेवा के थ्रू हमें लोन मिला 2 लाख का। हमने जो बता रहे हैं शायद फोटो ऑन किए हैं वो, उन्होंने घंटी लिया, 10 to 12 बहनों का एक ग्रुप बनाया है, उसमें लोन लेके उन लोगों ने घंटी लिया है। गुणवंती बहन તમે ચાલુ રાખો તમારું वीडियो। तो वो उसको लेके उन्होंने बोला कि हम अभी लोकल गांव से ही वो दाल खरीद करते हैं हमारे जैसे छोटे किसानों से, और उसमें से मूंग खरीदते हैं, चना खरीदते हैं और उसमें से मूंग दाल चना दाल वगैरह बनाते हैं ताकि गांव का पैसा गांव में रहे और गांव हमारा डेवलप हो। करीबन 600 किसान मेंबर्स हैं और हमारा टर्नओवर अभी 10 से 12 लाख है पर उसका ईयर का, और वो लोग 7,000 से 8,000 रुपया कमाते हैं। और इसका जो उनके कॉन्फिडेंस आके उन्होंने अभी गेहूं के आटे की भी मांग किया है और ये रीपेमेंट वो लोग आगे आगे करते હલો जाएंगे। અમે सो ગામમાંથી उस
હા બેન, અમે ગામમાંથી ચણા, મગ, તુવેર ખરીદીએ છીએ. અત્યાર સુધી અમે 8,000 કિલો તુવેર દાળ, મગ દાળ વેચ્યું. 8,000 તુવેર दाल मग दाल બધું વેચાણ કર્યું છે. सो 8,000 kg उन्होंने मूंग दाल तुवर दाल बेचा है। आभार गुणवंती बहन तुम्हारो। सो एक रिक्वेस्ट धर्मिष्ठा बहन से भी है जो जुड़ी है थोड़े से टाइम में। धर्मिष्ठा बहन आप भी थोड़ा बता दीजिए आपका। નમસ્તે સભી को। હા બેન, હાલો અમે ખેડૂતો પાસેથી જ બધું ખરીદીએ છીએ. તુવેર દાળ, મગ દાળ, ચણા દાળ હા અને ગુણવંતી બેન બધું હા કહી બોલો. દીધું मैं કહી હા દીધું આ હવે આપણે ધર્મિષ્ઠા બેન ને વારો આપીએ। હા આભાર તમારો। नमस्ते सभी को। मेरा नाम धर्मिष्ठा वाघेला है और मैं सेवा में पिछले 10 साल से सेवा की सभ्य हूँ और 7 साल से मैं सेवा में काम कर रही हूँ और मैं खेती के धंधे के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं कच्छ से हूँ। सेवा के अंदर खेती के जो कामगिरी है वो बहुत सालों से चल रही है और खेती झुंबेश की कामगिरी में अलग अलग प्रकार की बहुत ज्यादा कामगिरी होती है। उनमें हम जो हमारे छोटे और श्रीमंत खेडूत हैं उनके साथ काम करते हैं क्योंकि अभी क्लाइमेट के अंदर बहुत ही बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से छोटे खेडूत हैं जिनके 2 एकड़ 3 एकड़ में खेती है उनकी खेत में भी बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए छोटे खेडूत के साथ हम जुड़े हुए हैं और खेती झुंबेश के अंतर्गत हम क्लस्टर की कामगिरी करते हैं। क्लस्टर के अंदर ऐसा है कि हम बहनों के 50 और 100 बहनों के गांव के अंदर पाक के आधार पे ग्रुप बनाते हैं और सेवा के अंदर 7 राज्यों के अंदर 60 ग्रुप ऐसे हैं। 60 ग्रुप क्लस्टर के हैं जिनमें कामगिरी हो रही है क्लस्टर की। जैसे कि गांव बहुत दूर और अंदर की तरफ होते हैं और छोटे गांव होते हैं जहाँ से दवा और खातर है जो पाक के लिए वो लेने के लिए गांव के सभ्यों को दूर जाना पड़ता है और उनकी वजह से बहनों को बहुत ही दिक्कत पड़ती है और उनके वाहन के अंदर भी खर्चे में बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। और जो जूथ बनते हैं उनमें हम बहनों को शुरुआत से लेके पाक के आखिर तक मार्केटिंग तक जो वेचाण की होती है वहां तक हम बहनों को तालीम देते हैं। उनके अंदर हम बहनों को जूथ में क्लस्टर में ऐसी तालीम देते हैं कि हमें साथ में मिलके अगर हम खरीदी करें जैसे कि बियारण की खरीदी है, खाद की खरीदी है, दवाई की खरीदी है, अगर साथ मिलके अगर हम खरीदी करने जाए तो बहनों को उनमें बहुत ही अच्छा नफा भी हो सकता है और उनके वाहन खर्च में भी कम दिक्कत हो उनको। और उनके बहनों के जो समय होता है वो बहुत ही कीमती होता है क्योंकि उन्हें खेत में भी काम करना होता है, इसलिए समय में भी बचाव हो जाए इसलिए हमने बहनों को इस तरह से तालीम दी। और उनमें से बहनों को जो 50 का ग्रुप होता है उनमें से सभी बहनें साथ मिलके नक्की करते हैं कि जो पाक नक्की किया हुआ है उसमें उनको कितनी खाद की जरूरत है या कितनी दवाई की जरूरत है और वो सब मिलके जो सभ्य 2 से 3 4 सभ्य होते हैं वो साथ में मिलके जाते हैं और उनमें सभी बहनों को नहीं जाना पड़ता है। इस तरह से बहनों के समय में भी बचाव होता है और उनको बहनों को एक बहन को 1,000 से 1,200 तक या 800 तक खर्चा होता है उसके सामने बहनों को 300 400 या 500 तक ही खर्चा देना पड़ता है। आधे खर्चे में बहनों को राहत मिलती है। और जिस तरह से हम कामगिरी जूथ में खरीदी और वेचाण की तालीम देते हैं उसके साथ हम जैविक दवाएं और जैविक खाद के बारे में भी कि किस तरह से हम खाद और जैविक दवाएं का उपयोग हमारे खेत में करें उनकी भी तालीम देते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा बहनें अपने घर पे ही दवाई और खातर बनाते हैं और वो अपने पाक में उपयोग करते हैं। और इसके बाद बहनों ने जिस तरह से तालीम ली और अपने पाक में उनका उपयोग किया उनमें से बहनों को जो उनके पाक हुए वो बहुत पहले से उनके बहनों को अच्छे से भाव मिलने लगे क्योंकि पहले बहनों को 1100 और 1200 एक मण तक मिलते थे लेकिन अभी 1200 1300 तक उनको भाव मिलते हैं। और मण के अंदर भी 23-24 मण से ज्यादा बढ़ के 25 मण तक बहनों का उत्पादन होने लगा है। और इसके साथ जो पाक होता है बहनों का वो एक हम धंधा की एकम के साथ जुड़ के हम इन्हें आगे ले जाते हैं कि जो पाक होता है उनमें से बहन कुछ बनाए और वो उनका भी वेचाण करे जिनसे उनको भी बहनों को आवक मिल सके। कि जिस तरह से हम बात करें कि मूंगफली है तो मूंगफली के पाक का जो हमने ग्रुप बनाया होता है वो बहनें अपनी मूंगफली को ऑयल मिल तक ले जाती है जिससे उनमें से वो बहनें निकाल के तेल निकलता है
और उसके अलावा जो मूंगफली में से लड्डू बनते हैं, चिक्की बनती है, ये सब भी बहनें बनाती है और आसपास या अपने गांव में भी इसका वेचाण करती है। इस तरह से बहनों के साथ हम क्लस्टर की कामगिरी करते हैं। नमस्ते। तो थैंक यू अंजना जी। इसी तरह से हम बाकी जो देश हम करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हो गया श्रीलंका, वहाँ वॉर अफेक्टेड वुमेन्स का कोऑपरेटिव है, वहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स हमने डेवलप किए हैं। अफगानिस्तान हुआ, ऑल सार्क कंट्रीज में किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस प्लेटफॉर्म। नमस्ते। Thank you, Megha, and thank you, Gudvanti Ben and Dharmishta Ben, who had explained to us how they have been changing because they had started to take control of their lives. And they have also demonstrated to us the benefits of cluster approach. Now we are coming to the end of the session. And so I would request Reena Soni, Executive Director, Passing Gifts, to address the panelists and do the honors of vote of thanks. Yeah, first, thank you so much, everybody. It was like really heartening listening to everybody. So I really wanted to convey my deepest gratitude to all the panelists who were there. And it is very heartening to listen to, Rashmi ji, Anjali, Didi, how she, increased the flock size from 10 to 200, Kumari, Kalyani, and all the other, panelists who were there who spoke about this, Sonmani Chaudhary, Dr. Nutan Kaushik, Renuka Diwan, and we also had Komal Shah and Dipanvita, the way she, shared her journey and her thoughts, and now how, Megha Desai ji has shared, what Seva is doing. So I really wanted to thank each one of them. And I also wanted all of us to really, delve on this, that when we're talking about and celebrating these women entrepreneurs, we really need to look at celebrating them, on a daily basis, and not just like looking at Women's Day. So what is it that we really need to look at, this Women's Days? How is it that we can remove these, systemic barriers that make it harder for women? I think if each one of us can look at that, because I think that when a woman wins, when a woman rises, the world rises. So with that, I would really also like to extend a very, very, express my gratitude to Agriculture Today, and very ably led by Anjana for curating this. So thank you, Anjana, and thank you, everybody, for sparing your time and sharing your very valuable thoughts. So let's celebrate, Women's Day each day, because like when a woman rises, I think the world rises. So with that, I hand it over back to Anjana. Thank you, Anjana. Thank you, Reena, for giving us this opportunity. And thank you all once again for being here and making this session really vibrant. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.